Bismillahirrahmanirrahim. In my previous lecture, I told you about the letter, word, sentences, vowel, type of sentences एंड फ्रेज एंड प्रेडिकेट. इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया. तो हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करते चलते हैं. आपको पता है कि लेटर इंग्लिश ज़ुबान में किसी एक वर्ड को कहते हैं. जैसे हरूफ तहजी होते हैं. जब ग्रुप ऑफ वर्ड जब ग्रुप ऑफ लेटर मिलते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं. और जब दो या तीन वर्ड आपस में मिलें तो मिल के वो एक फ्रेज़ बनाते हैं. और इसके अलावा अगर उसके कोई ख़ास मीनिंग हो तो वो पूरा सेंटेंस बनाते हैं. फिर सेंटेंस की देयर आर सम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस थे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश समझने में जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो वाउल का यूज़ होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 26 लेटर हैं तो इसमें 5 वाउल होते हैं जिसको उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं. और इसमें बाकी जो वर्ड्स हैं 21 वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो कि जिनकी मखसूस आवाज़ें होती हैं. लेकिन ये सारे वाउल्स किस आवाज़ें सेम होती हैं, लेकिन जैसे कि उर्दू में हम ज़बर ज़ेर पेश से अल्फाज की पहचान करते हैं. और आपको पता है ज़बर और ज़ेर से अल्फाज का और पेश से अल्फाज के मायने बदल जाते हैं. इसी तरह से ये वाउल यही रोल प्ले करते हैं इंग्लिश की ज़ुबान में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाउल ए उसकी वो कौन कौन सी आवाज़ें निकालता है. वाउल ए जो है, जब अगर ए किसी वर्ड के शुरू में आए तो वो अलिफ मद्दा और बड़ी ये की आवाज़ पैदा करता है. और अगर वो दरमियान में आए तो बड़ी ये और छोटी ये की आवाज़ पैदा करता है. और जब वाउल ए किसी वर्ड के आखिर में आए, एंड पे आए, तो वो अलिफ की आवाज़ पैदा करता है. सो वी कैन से दैट लेटर ए प्रोड्यूस साउंड बड़ी जे and alif madda when it comes in the beginning of a word, and vowel a produce sound choti j and badi j when it comes in the middle of a word, and vowel a produce sound alif when it comes at the end of the word. So let's read some word. इसमें सबसे पहले है आर्क. जब आर्क में ए शुरू में आएगा तो उसने अलिफ मद्दा की आवाज़ पैदा की. और इसी तरह से एंट, ANT एंट, तो इसमें वर्ड के व्हेन इट कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द वर्ड इट प्रोड्यूस साउंड बड़ी जे. और अब हम देख लेते हैं कि जब वो व्हेन इट कम्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, लाइक पैन, CAP कैप, कैट, तो इसके दरमियान में ये बड़ी ये की आवाज़ इसने पैदा की है. इसके बाद हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं. दिस इज़ वर्ड सागा. तो सागा इज़ लाइक सम, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कोई लय या कोई साउंड गाने की पैदा करना. तो सागा में ये एंड पे आया तो इसने अलिफ की आवाज़ पैदा की है. ये चीज़ें हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं. अब हम आ जाते हैं लेटर ए के बाद आता है लेटर ई, जो कि वाउल है, दूसरा वाउल है, नंबर 2 वाउल है. ये लेटर ई नंबर 2 वाउल है, याद रखिएगा. तो लेटर ई भी इसी तरह जैसे उर्दू में मुख्तलिफ जो हरूफ होते हैं और जो अल्फाज बनते हैं उनसे उसमें ज़बर ज़ेर पेश से मुकम्मल मायने बदल जाते हैं. इसी तरह से देखते चलिएगा कि ई जब जो है वो दरमियान में आए तो बड़ी जे और छोटी जे की आवाज़ पैदा करता है, और आखिर में आए तो छोटी जे की आवाज़ पैदा करता है. लेकिन अगर शुरू में आए तो ई जो है अलिफ मद्दा की आवाज़ में आमतौर पे पैदा करता है. जैसे कि हम कहते हैं एग, एग, EGG एग. तो ये इसकी बिगिनिंग साउंड है. तो बिगिनिंग साउंड में इसने ए की आवाज़ पैदा की. जैसे एंड, जैसे एक्स, तो इसने बड़ी जे की आवाज़ पैदा की जब शुरू में आया. जब दरमियान में आता है रेड, बेड, बेड, बिस्तर, जैसे पेन, तो इसने दरमियान में बिल्कुल एक इस तरह की झटके वाली आवाज़ पैदा की है जो कि यूँ आप कह लें ज़बर की जैसे आवाज़ होती है उर्दू में. और जब इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड दैट, जैसे ही और
बी जब ये किसी लफ्ज़ के एंड पे आता है तो फिर ये इसकी इसकी आवाज़ जो है वो साइलेंट भी समटाइम हो जाती है और समटाइम ये छोटी ये की आवाज़ पैदा करता है। याद रखिएगा समटाइम ये साइलेंट भी हो जाती है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। नंबर 3 पे वाउल आई आता है। वाउल आई जो है उसकी भी अपनी साउंड है। अगर ये शुरू में आए तो आई की आवाज़, और जब ये दरमियान में आए तो ये ज़ेर की आवाज़, और आखिर में आए तो छोटी जी ये की आवाज़ निकालता है। vowel I when comes in the start of the letter it produce I sound, and when it comes in the middle of the letter it produce E sound, zer sound, and when it comes at the end of the letter it produce choti j sound. When it comes in the start of the word it produce like I, word I may, it produce I sound. And when we pronounce word iron, eyes, it produce I sound. And when I vowel comes in the middle of the letter, it produce zer sound, like zer sound, like we say tin, bin, NIB, निब। जैसे हम निब बोलते हैं, इसके सेंटर में आई आ रहा है तो ये ज़ेर की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और आखिर में जब ये आता है जैसे कि स्काई, जैसे कि वर्ड है चिली, CHILI, चिली, सुरख में, तो इसने छोटी जे की आवाज़ प्रोड्यूस की है, यानी कि ज़ेर की साउंड प्रोड्यूस की है। लेट्स कम ऑन वाउल ओ। वाउल ओ हैज़ सम फिक्स साउंड लाइक it produce oo sound when it comes in the beginning of the letter, vowel o, when it comes in the beginning of the letter it produce aw sound, and when it come in the middle of the letter it also produce same sound. When it comes at the end of the letter it it produce wow sound. Yeah, most of the time it produce wow sound, but when it comes in the beginning of a letter, it beginning of a word it produce as alif sound. So let's see some examples about it, like ox, owl, and like orange or of, it produce alif sound, alif wa o. When it come in the middle of the word it produce a sound, some high sound like a sound, top, slow, like this. And when it comes in the end of the word it produce wow sound, zabar sound, zabar, like go, like no, o, it produce o sound. Now we will see the vowel u, which sound it produce to make understanding easy. E, vowel u, when it comes in the start of the word it produce zabar sound, and when it comes in the middle of the word it produce pesh sound, sometimes zabar sound. And when it comes at the end of the word it produce wow sound. And in the beginning it produce alif sound, and in the middle it produce zabar sound, and at the end of the word it produce wow sound. Let's see these examples. Up, when it come in the beginning of the word it produce zabar sound. And this is sun, sun. Sometime it produce zabar sound. Pud, put, input, it's produce paste sound. So it has many varieties. Vowel u many varieties, rather than other vowels, that it produce different sounds at same places, according to the situation, according to the putting of consonant. And vowel u, when it comes at the end of the word it produce oo sound, wow sound, like you, y o u, flu, 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 जिसको हम जुकाम कहते हैं. So this is about the vowels and their
use of foul, how we use them in our daily language and our daily routine.